So what are meta tags? Meta tags are snippets of text in pages HTML that provides search engines with information about content and the purpose of a web page. Okay, though they don't appear on the page itself, but in the page's source code. Common meta tags includes meta title, meta description, meta keywords, which can influence how a page is presented in SERP. ओके, तो हमने मैटा टाइटल और मैटा डिस्क्रिप्शन तो देखा है, अभी फिर से उसको देखते हैं. सो दिस इज द मैटा टाइटल एंड दिस इज द मैटा डिस्क्रिप्शन. ठीक है, अगेन इन अ सिमिलर वे, दिस इज द मैटा टाइटल, दिस इज द मैटा डिस्क्रिप्शन. सो नाउ लेट्स क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर मिंत्रा रिजल्ट. तो अभी क्या होगा, अभी देखिए, ये हमारा मैटा टाइटल है, बाय वाइट स्नीकर्स ऑनलाइन एंड गेट अप टू 80% ऑफ. तो हमको ये जो टाइटल, ये जो मेटा टाइटल है, ये हमको हमारे पेज पे नहीं दिख रहा है कहीं कंटेंट में, बट ये प्रेजेंट है. तो ये प्रेजेंट होता है हमारे HTML कोड में. अगर हमें HTML कोड अपना देखना होता है वेबसाइट का, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं. सी व्हेन आई एम क्लिकिंग ओवर हियर, नो, सी नथिंग इज हैपनिंग बिकॉज these people have disabled the click so that competitors cannot peek into the HTML code. So this is also one thing which is done to stop competitors, like getting the access or the idea about the source code. So हम आते हैं यहाँ पे. So here this thing is working. So this is the title of the page is white sneakers, buy white sneakers online and get up to 25% off 11/10/2024. I mean, see, this is the issue. Okay, so they have not written title in the right order. Also description is missing. ठीक है, कीवर्ड्स हम ना इसको empty ही रखते हैं. We don't write keywords. ये बहुत पहले लिखा जाता था, अभी we don't need to write this keywords thing. तो अभी हम इसको HTML source code में कैसे देखेंगे. We will click over here and we will click on view page source. Okay, so now this is the HTML source code of the page. तो अभी हम क्या करते हैं, टाइटल पे जाते हैं, कंट्रोल F करते हैं, टाइटल. सो दिस इज द टाइटल, वाइट स्नीकर्स. सो दिस इज एक्चुअली द मेटा टाइटल जो कि हमको अभी गूगल में दिख रहा है. ठीक है, कहाँ गया ये वाला वेबसाइट, ये ओके, वाइट स्नीकर्स ही ले रहा है उसमें. तो कभी कभी ये भी होता है कि हमने जो टाइटल दिया हुआ है, हमने वाइट स्नीकर्स और इसको पाइप बोलते हैं, पाइप, एंड देन ये टाइटल दिया हुआ, राइट. तो जब हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं ना बीच में, तो समटाइम्स इसको क्या बोलते हैं ना, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में लोग और ऑपरेटर भी बोलते हैं. ठीक, तो और ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि गूगल कैन समटाइम्स टेक दिस ऑल्सो एज द टाइटल एंड दिस ऑल्सो एज द टाइटल, राइट. सो अभी वही हो रहा है. सो दिस इज द फुल टाइटल विच हैज़ बीन गिवन बाय देयर लाइक नीमन्स SEO टीम. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वाइट स्नीकर्स जो है टाइटल में, मेटा टाइटल यू कैन कॉल इट, यहाँ पे अपीयर हो रहा है ना. एंड सो दिस मेटा टाइटल विल नॉट बी विजिबल ऑन द वेबसाइट. दिस मेटा टाइटल इज एक्चुअली फॉर द गूगल, राइट. एंड द यूजर्स, लाइक व्हेन यूजर्स विल सी दिस, दे विल क्लिक ऑन इट. तो इनके मेटा टाइटल्स में तो हमें काफ़ी इश्यूज दिख रहे हैं. एंड like as a SEO, this is our duty, like this is our duty to analyze and then bring all these information, like in front of the team. Okay, so these are the issues, we need to fix them, right. Ideally I would not recommend to have date over here, brand name should be there. This is also how we write meta titles and sometimes, like with or operator, but this is the wrong way to write the title. And then now let's search for description, बिकॉज अभी तो डिस्क्रिप्शन इज़ मिसिंग, डिस्क्रिप्शन इज़ एम्प्टी ओवर हेयर. तो यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन डाला नहीं. अगेन दिस इज़ वन एरर. सो नाउ लेट्स चेक अनदर वेबसाइट जहाँ पे हमको डिस्क्रिप्शन दिखे. सो दिस इज़ एडिडास वेबसाइट. नाउ लेट्स चेक द टाइटल एंड द डिस्क्रिप्शन. सो दिस इज़ द टाइटल एंड दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन. नाउ लेट्स क्लिक ऑन व्यू पेज सोर्स. नाउ लेट्स क्लिक ऑन डिस्क्रिप्शन. See, description is written over here. Find your Adidas sneakers, white, all styles available, all styles and color available, right. तो ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया. फिर हम करते हैं टाइटल, चेक करते हैं. तो ये हमारा टाइटल हो गया यहाँ पे, स्नीकर्स वाइट Adidas. एंड अगेन दीज टाइटल्स आर नॉट, like नॉट इन द राइट
order, I would say. Like, a lot of optimization can be done on these websites. Now let's have search for this keyword section. See, keyword is empty. Reason being, like, meta keywords ना अभी हम नहीं लिखते. This was a very outdated practice. Like, यहाँ पे हम जो target keywords होते थे वो लिख देते थे. So now we don't need to write them. You would have got some idea about, like, this titles and descriptions thing. And what happens is, like, from SEO perspective, like, you don't need to worry about, like, how things are being implemented, like, from the technical end. So now I hope अभी water meta tags clear हो गया होगा.